Hello, Groomies. So, are you all ready to start with social studies today? So, let's begin with chapter number 7, Discoveries and Inventions. So, now take out the page number 61 in your books and let's read the keywords together. Discovery, the act of finding something that existed before but was unknown or unseen. एक ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद होती है बट उसके बारे में किसी को ना पता होता है और ना किसी ने देखी होती है. सो द थिंग्स और एन आइडिया विच इज़ ऑलरेडी देयर बट इज़ अननोन और अनसीन इज़ अ डिस्कवरी. इन्वेंशन, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्टेड बिफोर. ऐसी कोई नई चीज़ बनाना जो पहले कभी नहीं थी. ओके, लाइक मोबाइल फोन्स, वो हमेशा से तो नहीं थे ना. समवन हैज़ इन्वेंटेड मोबाइल फोन्स. ओके. थर्ड इज बसाल्ट, अ डार्क एंड डेंस रॉक. एक डार्क कलर का बहुत ही डेंस बड़ा सा रॉक होता है, उसका क्या नाम होता है? बसाल्ट. The first topic of the chapter is discovery of fire. Now we all know what fire is. We have seen fire, we cook food in fire, we do so many things with the help of fire. We burn crackers also, but which is not a good sign. Now let's read. We cook food with the help of fire. Fire also gives us warmth during cold nights. It is an important discovery made by early man, but it took many years for the early man to understand how to light up fire on his own and use it for himself. Okay, now we all know that food is being cooked with the help of fire and it gives us warmth during cold nights. Winters may we just use fire to feel warm na? Yeah. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. अर्ली मैन्स की ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक है. एंड इट टुक रियली अ लॉट ऑफ ईयर्स टू डिस्कवर फायर. इन द फॉरेस्ट, अर्ली मैन केम अक्रॉस नेचुरल रिसोर्सेज of fire like volcanic eruptions and forest fires that were produced due to lightning. When the fire used to spread all across, it made early man afraid. They also observed that animals also used to fear fire. Now, early man को कैसे पता चला कि there is something like fire on the earth? जब उन्होंने वॉल्केनिक इरप्शंस को देखा और जो अपने आप फायर लग जाती है कई फॉरेस्ट में, उसको जब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उन्हें लगा ओ देयर इज़ समथिंग लाइक फायर. और फिर उन्होंने क्या नोटिस किया कि एनिमल्स भी फायर से डरते हैं, बट अर्ली मैन खुद बहुत डर जाते थे जब एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती थी या सडनली वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाता था, तो ये उनके लिए भी काफ़ी फियरफुल था. It is said that early man discovered fire during his migration from Africa. जब early man अफ्रीका से माइग्रेट कर रहे थे, मतलब अफ्रीका छोड़कर कहीं और जा रहे थे, तब उन्होंने फायर को ऑब्जर्व किया. One day, early man tried to light fire from the sparks of the fire in a jungle. एक बार अर्ली मैन ने क्या किया कि जंगल में उसने एक स्पार्क देखा फायर का, छोटी सी चिंगारी जिसे हम कहते हैं. तो उसने क्या किया, उस स्पार्क के यूज़ करके उसने फायर जनरेट करने का ट्राई किया. जब बाकी के अर्ली मैन ने ये देखा तो उन्होंने क्या किया, ड्राई लीव्स इकट्ठा की जंगल से और उस फायर में ऐड कर दी. तो उससे क्या हुआ कि ये जो फायर थी वो और बढ़ गई, उससे लाइट जनरेट हुई, उन्हें वार्मथ मिला एंड दे फेल्ट प्रोटेक्टेड. So the first time they used fire to light their caves during cold nights and stay warm. Later on, they discovered that when two flint stones were rubbed, they ignited sparks. बाद में उन्होंने क्या डिस्कवर किया, जब दो फ्लिंट स्टोन्स मतलब एकदम
बड़े से छोटे से स्टोन्स जो हम उन्हें रब कर सकते हैं और उनमें से स्पार्क जनरेट हो रहा था। इससे उन्हें क्या पता चला कि वो लोग खुद भी फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। Earlier, they were dependent on their natural fire in jungles, and now they could produce it on their own. Till this time, they just knew that fire could give them light, warmth and protection from animals. अभी तक उन लोगों ने क्या ही चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि फायर की हेल्प से वो लोग खाना बना सकते हैं, अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं, अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लाइट जनरेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, अभी उन लोगों ने खाना बनाना नहीं सीखा था। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, वन डे वाइल हंटिंग फूड दे माइट हैव फाउंड डेड एनिमल्स एंड दैट गॉट रोस्टेड इन द नेचुरल फायर ऑफ द जंगल। एक बार क्या हुआ, वाइल दे वर हंटिंग उन्हें डेड एनिमल्स की बॉडीज मिली जो जंगल की नेचुरल फायर से रोस्ट हो चुकी थी। When early man ate those roasted animals, they find them softer and tastier than raw flesh. तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उस डेड बॉडी एनिमल की खाई तो उन्हें वो उस रॉ फ्लैश से ज़्यादा ही सॉफ्ट और टेस्टी लगी। तब उन्होंने रियलाइज़ किया, ओके सो नाउ वी कैन यूज़ द फायर टू मेक आवर फूड मोर टेस्टी एंड सॉफ्टर। नाउ यूजेस ऑफ फायर फॉर अर्ली मैन। तो अभी तक हमने जो भी यूजेस पढ़े वो क्या थे, फायर अर्ली मैन की किस तरीके से काम आ रही थी, फॉर हीट एंड वार्मथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड फॉर कुकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग। अब हमें ये जानना है कि अर्ली मैन ने ये फार्मिंग का कॉन्सेप्ट कैसे डिस्कवर किया, उनके क्या दिमाग में आया, क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की जिससे उन्हें लगा ओके वी कैन डू फार्मिंग ऑल्सो, वी कैन ग्रो आवर ओन फूड। When we eat fruits, we throw away the seeds. It is natural. We don't keep seeds na. We just throw them. This is exactly what early man also used to do. अर्ली मैन भी सेम करते थे। वो लोग भी जो भी हमारे फ्रूट्स में बीज आ जाते थे तो वो क्या करते थे, उन्हें थ्रो कर देते थे। स्लोली दे नोटिस्ड दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड, रिसीव्ड वाटर एंड वार्मथ, दे ग्रू। फिर अर्ली मैन ने क्या नोटिस किया कि ये जो सीड्स हम लोग गिरा दे रहे हैं इनको जैसे वाटर, वार्मथ और लाइट मिल रही है, ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एज अ प्लांट। लेटर ऑन दे डेलिबरेटली स्टार्टेड पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड टू ग्रो प्लांट्स। कुछ समय बाद उन्होंने जानबूझ के सीड्स को ग्राउंड के अंदर सो करना स्टार्ट किया टू मेक देम अ प्लांट। In this way, they started growing their own crops and became farmers. फिर इसी तरह से वो लोग ने क्या किया, अपने खुद के क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया and they all became farmers. In many parts of India, wild crops like wheat, barley and rice grew naturally. But when early man recognized that the seed can be sown to get new plants, he started growing these on his own. इंडिया का जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे वाइल्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस ये अपने आप ही ग्रो करने लगती थी। बट जैसे ही अर्ली मैन को पता चला कि सीड्स को सो करने से क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने आप अपना खाना खुद ग्रो करने लगे। ही यूज्ड सम पॉलिश्ड स्टोन टूल्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स ईजिली। उन्होंने जो स्टोन से टूल्स बनाए थे उसको उन्होंने कैसे यूज़ किया, क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए। जब क्रॉप बड़ी हो जाती थी, हार्वेस्ट हो जाती थी, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू कट दैम विद द हेल्प ऑफ दोज स्टोन्स। वंस द सीड्स वर सोन, द क्रॉप्स नीडेड केयर। जब ये सीड्स ग्रो कर देते थे तो क्रॉप्स बड़ी हो जाती थी तो उन क्रॉप्स की केयर भी करनी होती थी ना, फ्रॉम एनिमल्स की, एनिमल्स उन्हें आकर खा नहीं ले। But when he had to take care of his crops, he had to settle at a place. But अगर वो लोग क्रॉप्स का ध्यान रखने के लिए सोचते थे तो उनको होता था कि हम लोग अपनी एक सेटलमेंट भी बनाए, बिकॉज अर्ली मैन वॉज अ वैंडरर, ही नेवर यूज टू स्टे एट
one place. But now they were thinking to have their own home. So early man had to take care of his crop, but when he had to take care of his crops, he had to settle at a place. Thus, farming brought a lot of changes in the life of the early man. तो जैसे उन्होंने फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया, उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लग गए. वो चेंजेस क्या थे? Now let's read settlements of early humans. Farming changed the human society in a great way. Water was the basic need for cultivation. फार्मिंग जैसे ही ये आइडिया आया फार्मिंग का, तो जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए. बट फॉर फार्मिंग द वेरी बेसिक नीड वॉज वाटर. तो अर्ली ह्यूमन्स को ऐसा लगा कि नाउ इफ़ दे विल सेटल नियर लेक्स एंड रिवर्स, फार्मिंग वुड बी वेरी ईजी फॉर देम, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पानी आराम से अवेलेबल होना था. लेटर दे बिल्ड मड हाउसेस विथ thatched roofs to live. Slowly, when a cluster of them started living together, they formed a community and then a village. जैसा कि हमें इस इमेज में भी दिख रहा है कि इन लोगों ने क्या बना लिए हैं, छोटे छोटे हट्स बना लिए हैं with the thatched roofs, as you can see, and they all have built a community because they started living together. Domestication of animals and plants. Early man had already tamed wolf cubs to help them in hunting. Till this time, early man ने क्या कर लिया था? जो wolf के cubs मतलब the young ones of wolf, they started keeping them with themselves for hunting other animals. Now more animals like dogs, cattle and chicken were domesticated. तो उन लोगों ने बाकी क्या किया? Dogs, cattle, chicken को भी domesticate करना start कर दिया. Cattle is cow, buffaloes, goats. These all animals are cattle. They also domesticated horses for carrying loads. उन्होंने horses को भी domesticate करना start करा क्योंकि they could carry a lot of things and loads on horses. Sheep were reared for their wool. Sheep को उन्होंने रखना start किया so that they could get the wool from them. Along with animals, they also domesticated plants. They domesticated wheat and barley. They started, as they were also growing their crops, so they started having plants, wheats and barleys. Improved tools. When early man started cultivation, he started using basalt tools like sickle, blades and grinding stones. जब उन्होंने कल्टिवेशन करना स्टार्ट किया तो उन्हें उसी तरह के टूल्स रिक्वायर्ड होते थे. सो व्हाट दे स्टार्टेड टू यूज वाज basalt tools, which were sickle blades for grinding stones. These were harder and stronger tools. ये बहुत ही strong और hard होते थे. These could be shaped and polished too. ये stones को वो shape भी दे देते थे and polish. As you can see in this image, the stones are so pointed and sharp and also hard so that they were properly used for cultivation. Baskets and pots. As the crop production started, it gave rise to the need to have some pots to store the surplus food. अब जैसे उन्होंने crops grow करना start कर दिया था, so they needed pots and containers to keep with them. So they started producing baskets and pots. Initially, wild grass was used to weave baskets. Starting के अंदर they used to use wild grass for weaving the baskets. Later, wet clay was used to plaster them and make them more solid and durable. The discovery of fire also played an important role to bake the clay pots. अब उन्होंने fire भी discover कर लिया था. So what they used to do was they used to bake those clay pots so that liquid could also be easily stored in it. Invention of wheel and ancient modes of transportation. Now, this is the very important topic, Roomies. हमें पता है कि wheel कैसे invent हुआ. We have seen wheel in so many things. In all the vehicles we see wheel, in the cars, bicycles. है ना? हमने देखा है ना wheel. So now let's know how it was discovered. It is believed that early humans might have seen logs of wood floating on the water. They also noticed that empty logs could float easily.
This inspired them to make their log boats. They also tied some logs of wood and used it to travel on water. In this way, they started using rafts. ऐसा कहा जाता है कि जो अर्ली मैन था उसने एक बार क्या देखा, वाटर पे वुड का लॉग फ्लोट करते हुए देखा. व्हाट इज लॉग? हमने वुड की ब्रांच देखी है जो सिलेंडर शेप में होती है, दैट इज कॉल्ड अ लॉग. तो उन्होंने नोटिस किया जो एम्प्टी लॉग होता है वो पानी पर इजीली फ्लोट करता है. इस चीज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने खूब सारे लॉग्स को इकट्ठा किया, उन्हें टाई करके वाटर पे छोड़ा, तो ये एक राफ्ट की शेप में उनके लिए बन गया था. सो दे स्टार्टेड यूजिंग राफ्ट्स. They made sledges to carry heavy loads. Now let's know how did they discovered and how did they invented sledges. They had to travel on land more than water. उनको पानी से ज़्यादा लैंड पे ट्रैवल करना होता था. For this they had to develop their means of carrying loads easily. इसके लिए what they were supposed to do, उन्हें जो ऐसी कुछ चीज़ बनानी थी जिससे वो लैंड के ऊपर अपना सामान easily एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें. Initially they made sledges to carry heavy loads, but it was still difficult to pull the sledge. अब उन्होंने स्लेज बनाया पहले. स्लेज इज अ फ्लैट वुड जो उन्होंने जिस पे सामान रखा जा सकता था, बट उसको मूव करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो दे गिव इट अ थिंक कि हम और क्या कर सकते हैं टू मेक इट मूव ईजीली. दे फिक्स्ड पीसेस ऑफ वुड अंडर दीज. दे यूज डिफरेंट शेप्स ऑफ वुड पीसेस. इनिशियली उन्होंने अलग अलग तरह का वुड का शेप बनाकर उस स्लेज के नीचे प्लेस करना स्टार्ट किया कि देखते हैं कि ये लगाने से शायद वो ईजिली मूव करे. बट ग्रेजुअली दे रियलाइज्ड द राउंड पीसेस ऑफ द वुड helped to move their cart easily on smooth as well as on rough surfaces. उन्होंने रियलाइज़ किया जो राउंड पीसेस ऑफ वुड होंगे अगर उन्होंने वो स्लेज के नीचे लगाए तो वो ईजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकेंगे. These were the first wheel. One of the greatest inventions done by early man was the wheel. As you can see in this image also, the early man has made the wheel and is now going to put the load on it and to take it different places. It is said that wheel is the greatest inventions done by early men. This wheel not only helped to move the cart and transport heavy loads but also helped to make pots. The wheel was used to turn clay that was further shaped into a pot. Later these wheels helped to weave clothes. सो व्हील को सिर्फ उन्होंने इस तरह से ही काम में नहीं लिया कि हम हमारे कार्ट में लगाएं. दे ऑल्सो यूज्ड इट टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड लेटर ऑन with more observation they started weaving clothes with the help of these wheel. So groomies, this chapter was really interesting. I hope you also liked it, and now you have to read this chapter on your own for understanding it in a better way. Thank you for attending this session.